Hi guys, welcome to MotorManiacs. This is Akshay and we have something very special with us today. कुछ लोग इसको बूसा किलर कहते हैं, कुछ लोग इसको किंग ऑफ हाइपर बाइक्स कहते हैं. A very rare bike in India, the Kawasaki ZX14R. Not only do we have this very rare bike with us today, हमारे साथ आज इस बाइक के ओनर भी हैं जिसके साथ हम बाद में बात करेंगे. So guys, let's start the video. So guys, you know what this bike is? This bike is a transcontinental ballistic missile, or I must say a transcontinental dragster. ये बाइक की जो शुरुआत हुई थी, जो इंस्पिरेशन हुई थी, was from the 90s era, जब companies and the riders were obsessed with the top speeds. उस टाइम पे आपकी Honda Blackbird, इसका प्रोड्यूसर द निंजा 12R और हायाबुसा के बीच में देयर वाज अ स्पीड वॉर गोइंग ऑन. उस टाइम में जब कावासाकी ने इस बाइक को फर्दर इवॉल्व किया 2008 के अंदर, दे इंट्रोड्यूस द ZZR 1400 और उस बाइक का एवोल्यूशन है. दिस इज द लास्ट एवोल्यूशन ऑफ दैट बाइक विच इज द कावासाकी ZX14R. The Kawasaki ZX14R. So guys, let's go for a brief overview of the bike. First of all, the one thing that strikes you is the sheer size of this bike. It is a huge bike. And not only that, अगर हम styling की बात करते हैं, जो normal sports bikes होती हैं, जो leader bikes होती हैं, ये उतनी एजी नहीं है. इट इज मोर कर्वेशियस अगर आप उनसे कंपेयर करते हैं इसकी स्टाइलिंग को, एंड देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर इट. दिस बाइक वॉज मेड फॉर वेरी हाई स्पीड्स, टॉप स्पीड की अगर हम बात करते हैं, इवन स्पीड्स अबव 300 किलोमीटर्स पर आवर. सो दिस बाइक हैड टू बी मोर एरोडायनामिक कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स बाइक्स. अगर आप इसको आगे से भी इसकी प्रोफाइल देखेंगे, इट इज वेरी कर्वेशियस एंड पता लगता है कि हाँ, द बाइक इज वेरी स्लिपरी, सो इट कैन स्लिप थ्रू द एयर फॉर द मैक्सिमम टॉप स्पीड. अगर हम टॉप स्पीड की बात कर ही रहे हैं गाइस, वी हैव टू कम टू द मेन पार्ट ऑफ द बाइक विच इज द ह्यूज इनलाइन 4 engine. 200 हॉर्स पावर, डजंट मैटर. बहुत सारी बाइक्स के अंदर 200 हॉर्स पावर है, बट व्हाट मैटर्स, दिस इज अ 1441 cc engine. नॉट अ लीडर बाइक. 1000 सीसी और एक 1441 सीसी में जमीन आसमान का फर्क है. और उससे क्या बनता है? टॉर्क. 159 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. और यही जो टॉर्क है, टॉर्क गिव्स यू एक्सेलरेशन. और अगर हम इस बाइक की बात करते हैं, इट हैज मैसिव क्रेजी एक्सेलरेशन. दैट इज ऑल कर्टसी. जो इसका इंजन है, इट्स अ वेरी स्पेशल इंजन. किसी और बाइक से हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते. एक दूसरी बात, अगर हम एक और बात करते हैं बाइक की, कंपेयर टू द कंपटीशन, जो इसका हायाबुसा मेनली कंपटीशन था, दिस हैज अ मोनोकॉक शैसी.
तो अगर हम दूसरी बाइक से कंपेयर करें, द हैंडलिंग इज अ लॉट बेटर कंपेयर टू द हायाबुसा. दिस बाइक वाज नोन एज द बूसा किलर, नॉट ओनली बिकॉज इट हैड अ बिगर engine, but it also handled better compared to the Hayabusa. लुक तो जबरदस्त है ही बाइक की, बट जो इन्होंने हार्डवेयर दिया है इसके अंदर, दिस इज द लास्ट ऑफ द बैच. सो दिस बाइक एक्चुअली हैड प्रॉपर ब्रेक्स, ब्रेम्बो M50 कैलिपर्स. दिस इज एज गुड एज इट गेट्स. बहुत ही बढ़िया ब्रेक्स थी. एंड ओलिन्स के TTX39 सस्पेंशन जो उन्होंने रेयर के अंदर दिए थे, दिस इज अ वन ऑफ. ये जो 39 TTX सस्पेंशन थी, इन्होंने बाद में किसी भी बाइक में नहीं डाली ओलिन्स ने. सिर्फ 14R के लिए स्पेसिफिकली ये सस्पेंशन डेवलप की गई थी. सो ओवरऑल गाइज, इट्स अ, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास. दिस इज लाइक अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल ड्रैगस्टर, समथिंग दैट इज मेड फॉर स्पीड बट ऑल्सो इंक्लूडिंग कंफर्ट. अगर हम अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं, दिस इज नॉट एज कमिटेड एज अ लीटर बाइक. It's very very comfortable. You can do long hours of riding on it, but at a massive ton of speed. So guys, we have the owner of this beautiful bike with us today, Mr. Rabbi. Hi sir, how are you? All good. So what was your inspiration behind getting such a monster? So after selling my first bike, there were basically two prerequisites. One, it should have an inline four engine, which I was growing more fond of, and the second, it should match up to the size that I have. Right. So would you like to also tell us about your Instagram page, the name of your Instagram page? So it's called Giant on Wheels. Yeah. So that is for good reason, guys. Rabbi sir is a very sort of a good, well proportioned guy and he's very fit. तो ये बाइक उनको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है. So इससे पहले आप क्या राइड कर रहे थे? I used to have a Multistrada 950 Ducati. Okay. So it's a completely different choice now then, huh? Somewhat, but although there are many similarities also, I would say. Ducati being as sporty as I would say this one, but obviously it had a little off-road proportion to it, but this is strictly up to the sport, the nature of it. When you talk about hyperbikes, Hayabusa की बात तो करनी पड़ेगी एक बार. आपने उसको भी कंसिडर किया था? Because in India, I think that is the more popular bike. Yes, obviously. So after selling my Ducati, I initially booked that, the third generation, but the waiting period was way more. I would say they gave me an estimate of about 6 months waiting. तो ये waiting थोड़ी मेरे लिए ज़्यादा थी, और since it was a new launch, तो हमको ये भी नहीं पता था कि उसकी क्या actually on-road reviews थे at that time. Okay. So people were just going crazy and booking that, so that resulted in a very long wait. Right. Yeah. So apart from the wait, आपको क्या लगता है कि हायाबुसा और इसके अंदर, वैसे आपने हायाबुसा भी डेफिनेटली चलाई होगी एंड ये आप तो चलो ओन कर ही रहे हैं, what do you think are the main differences? First, according to me, the engine is much smoother. The second, the riding position is quite a lot easier for me. Yeah. Okay. Busa में lean ज़्यादा करना पड़ता है. This, on the other hand, is a little more relaxed position. Okay. So this is a proper hyper tourer sort of a bike. Right. So what is that one thing that is the defining feature कि एक चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है इस बाइक के अंदर? I would say the uniqueness, क्योंकि ये बहुत ही, जैसे आपने बताया, रेयर बाइक है,
तो the whole essence of riding a super bike is जितनी वो कम दिखती है लोग उसको ज्यादा appreciate करते हैं. Right. Since Busa's third generation launch, इतनी ज्यादा वो बिक की हैं कि every used dealer has one pretty much Right. to sell. Right. इतनी शोरूम में नहीं होगी जितनी used bikes बाहर आ गई है. So this appealed to me because this was a very rare bike and I pretty much used to surf the net every other day. And जब मेरे को ये दिखी तो I knew I had to grab this opportunity. Right. So अगर हम एक लुक और अपील की बात कर ही रहे हैं, what is the reaction that people have looking at this bike and just riding while it's riding? सो राइडिंग की भी मैं बात करूं, अगर मैं ग्रुप राइडिंग की भी बात करूं तो जहां पे भी ग्रुप में लाइन में एक बाइक्स खड़ी रहती हैं तो सबसे पहले a common man comes to this bike. The sheer size appealing to many and obviously it holds its stance very good. Right, right. So have you done any other mods to it to maybe suit it according to your needs? So I got this custom snake dip that I got it recently. Other than that, just an exhaust. These are the slip-ons by M4. Okay. Other than that, the bike is quite stock. Okay, okay. So are you going to be planning to keeping this bike for a while? At least a couple of years more until I get a suitable rematch to this. Right. So anything you want to say about this bike, about your bond with this bike? So ever since I've owned this, मुझे लगता है कि इससे इसके इंजन से सबसे ज्यादा प्यार है. Because obviously Ducati में मेरे को वो साउंड वो फैक्टर नहीं मिल पाता था. Right. Other than that, कुछ छोटी छोटे चीजें होती हैं जैसे डुकाटी में फॉल्स न्यूट्रल हो जाता था, न्यूट्रल ढूंढने में कभी परेशानी होती थी. इस बाइक के साथ मुझे नहीं कभी हुआ ऐसी दिक्कत. प्लस उसके अलावा सबसे कम मेंटेनेंस की बाइक है मेरे हिसाब से. ऑब्वियसली बूसा से कंपेयर करें, बूसा थोड़ी ज्यादा इससे मतलब रिफाइंड है, जिसका इंजन कितने सालों से चलता आ रहा है वही. बट उसके अलावा आई थिंक बहुत कम मेंटेनेंस मांगती है ये बाइक. Okay. So guys, ये थे रब्बी sir and he was talking about his love for this monster, the ZX14R, a very rare bike I must add again. And guys, you see something like this is something else. I mean, compare अगर हम normal बाइक स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर करते हैं, बहुत ही एक रेयर ब्रीड है, बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट की बाइक है. एंड दिस अनफॉर्चुनेटली हैज वैनिश्ड, बहुत डिसकंटिन्यू हो गई है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर. बहुत रेयर है कि कभी किसी कंट्री के अंदर कंटिन्यू हो रही है ऐसी बाइक, बिकॉज कावासाकी ने अब एक H2 और H2 जो इनका टूरर है वो इसके साथ रिप्लेस कर दिया है. बट गाइज, there are owners like Mr. Rabi who are keeping this breed alive. What can we say? It's a beautiful bike. So guys, thanks for watching. Do like, share and subscribe the video. Thanks.